Hello everyone. This question appears in Class 6 NCERT chapter of Practical Geometry. This is first question of its exercise 14.5. So the question says that draw AB of length 7.3 centimeter and find its axis of symmetry. So firstly हम एक line segment draw करेंगे AB of length 7.3 with the help of ruler. ये हमारा point A and point B. Then find its axis of symmetry. So firstly हम कंपास का पॉइंटर ए पर फिक्स करेंगे एंड इसे ओपन करेंगे मोर देन हाफ मींस मोर देन इट्स अबाउट 4 सेंटीमीटर तक हम इसे ओपन करेंगे, इसके हाफ से ओपन कर लेंगे, देन पॉइंट कंपास का पॉइंटर पॉइंट ए पर फिक्स करेंगे, देन वन आर्क ए बी के ऊपर एंड वन बिलो द ए बी, देन सेम पॉइंटर कंपास का बी पर सेट करेंगे, देन वन आर्क ऊपर की तरफ एंड वन आर्क नीचे की तरफ. सो हमारे पास दो पॉइंट मिल जाएंगे हमें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी एंड डी. इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. सो CD is the axis of symmetry. Thank you.